Good morning, class 7th. Yesterday we did exercise 3.1. Today we'll move further to learn some new concepts. First is mode. As you can see, the definition of mode. The mode of a set of observations is the observation that occurs most often. It means it is the data which comes maximum number of times. जो सबसे ज़्यादा बार डाटा आता है that is mode. इसके बाद हमारे पास है मीडियन. जैसे आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं मोड का, जैसे 9 टाइम्स आया है नंबर ऑफ मैचेस. 1 ने 9 मैचेस खेले हैं. 2 14 टाइम्स. 3 7 टाइम्स. 4 5 टाइम्स. 5 3 टाइम्स. 6 2 टाइम्स. Then mode will be 1. Next is median. You can see mode, the data which occurs most frequently. Now median. Median is value of middle most term. You just note down these two definitions. Now while doing exercise I'll make it clear. Mode and median, how to calculate mode and median, I'll make it clear. Exercise 3.2. Question number 1. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. I'll note down 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. These are the scores of 15 students. Now we need to calculate mode and median. Mode, सबसे पहले मोड. देख लीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है. 19. देखिए, see the number which is coming maximum number of times is 20, which is coming 1 2 3 4 times. So mode is 20. Now for median, I did not explain method yet. I explained definition only, value of middlemost term. Now what is procedure? First step, arrange all the datas in ascending or in descending order. As I have arranged all the given data in ascending order, then median, we used to have two formulas. For if n is odd, then median is equals to n plus 1 by 2th term, and if n is even, then median is n by 2th term plus n by 2 plus 1th term upon 2. Here see, n is equals to means how many terms are there. You can see n is 15 for this particular question. Therefore here median is
15 means n plus 1 by 2th term, this formula 15 plus 1 by 2th term means 16 upon 2th term. This is 8th term, 16 by 2, 2 8 is 16, 8th term. Now you can see what is value of 8th term. 1 2 3 4 5 6 7 8, 20. Median is 20, mode is 20. And it is also been asked in question, are median and mode same? So you will write yes, median and mode are same. Now question number 2. Again it is same as question number 1. The runs scored in a cricket match by 11 players as follows. Find mean, mode and median. Mean, you know how to calculate mean. Sum of all the terms divided by number of terms means divided by 11 for this question. Mode आप देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है दैट इज़ मोड. और मीडियन आपको वही करना है फिर n प्लस 1 बाई 2th टर्म की वैल्यू सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. उसके बाद देखेंगे कि 6th नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है. फिर उसमें अगेन द क्वेश्चन इज आर दे सेम. फिर देखोगे कि ये सेम है क्या. फिर क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है. मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is the weight in kg of 15 students 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47. Find the mode and median of this data. Is there more than one mode? तो पहले में आपको मोड और मीडियन निकालना है. Yes, after arranging these data in ascending order, you can see 38 is coming 3 times and 43 is coming 3 times. Maximum number of times 2 datas are occurs. So mode will be 2. 38 3 बार आ रहा है. फिर 43 भी 3 बार आ रहा है. तो हम कोई स्पेसिफिक मोड नहीं निकाल सकते. तो 2 वैल्यूज होंगी मोड की. अब मीडियन यहाँ n इज इक्वल टू 15 है. ऑड है. n इज इक्वल टू 15 ऑड है. तो इसका मतलब कि मीडियन का फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म. फॉर ऑड यू नो द फॉर्मूला 15 प्लस 1 बाई 2th टर्म. दिस इज 16th बाई 2th टर्म. इसको कैंसिल करेंगे 8. तो 8th टर्म की वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मीडियन हमारी हो जाएगी 40. तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस जो छूट गए उनको कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में क्योंकि डाटाज काफ़ी सारे होते हैं तो उनको अलग अलग करने में टाइम लगता है. तो इसलिए आराम से करिए.